करना ही है. Bro, I was an extremely anxious guy. Very anxious. I used to lose sleep. और मुझे पता भी नहीं चलता था कि it's a bad thing. क्योंकि मैं Instagram से convinced था कि बहुत हसल करना है लाइफ में. ठीक है, बट क्या कहाँ पे हसल करना है, किस डायरेक्शन में हसल करना है, ये किसी ने बताया नहीं. तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एंक्शियस था. प्लस मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था भाई. तो एंग्जाइटी तो होना ही है. बट इवन बैक देन I used to take wisdom very, very seriously. And my best friend's father, my best friend's name is Atharva, we call him Kullu, by the way. And his father is Ajay Uncle. In 7 years, he built $1 million company, went door to door of companies to sell, and eventually built a very successful business. Comes back home, plays guitar, has whiskey and sleeps. अंकल ने 2 चीज़ें सिखाई. पहली चीज़ ये है कि जब भी आप इस मार्केट में, इस इंडियन मार्केट में बिजनेस करना चाहते हो, तो सबके लिए इनफ है. तो आपको ना किसी के हारने की जरूरत नहीं है. For you to win, Nikhil doesn't have to lose. Nikhil can also win with you. In fact, business is such a beautiful thing that if you make Nikhil win, someday Nikhil will come back and give you business. Interesting. So whenever you see friends around you doing insanely well in the creator ecosystem also, bro, I promote my friends like crazy. I keep endorsing my friends every now and then because their win is my win. मुझे competition नजर नहीं आता, मुझे collaboration नजर आता है. Like Tanmay has helped me so much. Bro, I was a nobody when Tanmay spoke to me. But Tanmay helped me so much. So, every now and then, I've been very lucky to find these people. Beautiful. And number 2, he taught me that comparison is the killer of all joy. The moment we stop using Instagram, we will realize that the anxiety will go down drastically. क्योंकि जैसे इसने बताया, आप consistently ना compare करते जाते हो अपने आप को किसी और से, और आपको उनकी रियलिटीज पता ही नहीं है. तो इंस्टाग्राम बंद करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आई एम स्टिल अ वेरी एंक्शियस पर्सन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव बिकम कामर. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, माई मदर टोल्ड मी, वेयर वी कम फ्रॉम एवरीथिंग इज प्रिविलेज. सो इन 2019 आई वाज मेकिंग 3,000 रुपीज अ मंथ भाई. 3,000 रुपीज अ मंथ. 3,000 रुपीज अ मंथ का ब्यूटी ये है कि एवरीथिंग इज एन अपग्रेड, राइट? सो टुडे वेर एवर वी आर, आई ऑलवेज लुक बैक and think about my life back then. During that time, my brother got detected with lung tumor. So my parents had to shift to my nanny's house and there was nobody at home. And my mother casually said, Abhi to tu to businessman hai, so you will have enough money, right? So see you. So she left. I couldn't bother them. So I had 3,000 rupees. तो मैं क्या करता था, काजू बिरयानी खरीदता था from the nearest place. उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. और उसमें 4 काजू थे भाई. तो नाम के लिए काजू बिरयानी था, ठीक है. तो मेरे दोस्त ये मजाक उड़ाते हैं कि गणेश रात को ये सोच रहा है कि 14 काजू कब खाऊं. ब्रेकफास्ट में खाऊं, लंच में खाऊं कि डिनर में खाऊं. तो जब मैंने वो देख लिया है, एंड दैट इज बिकॉज माई मदर कंसिस्टेंटली पुट मी इन फ्रंट ऑफ रियलिटी कि एवरीथिंग लुक्स लाइक अ प्रिविलेज. नाउ वेर एवर आई एम, आई फील लाइक life is so much better that I don't have to be anxious. That still doesn't make me very, very calm, but it at least makes me less anxious. युवा का तो बना ही उस पे है पूरा. हमारा युवा पे तो हम लोग करते ही exactly pretty much is like supporting and pushing, you know, all kinds of incredible folks. कुल्लू तो मतलब हमारा, मतलब मैंने ऐसे रिश्ते में बना लिया इसको. तो मुझे भी कुछ करते हैं, तुम आ जाओ भाई. No, so well said, yeah. Such beautiful, really, really, and thank you for sharing about your life also. It's really wonderful. Can I add a few things? Yes, please. I wanted to come to you. So, first of all, I completely agree on the scarcity and abundant mindset. वो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो abundant mindset में जाना, कि usually हमें लगता है कि किसी और का अच्छा हो रहा है तो हमारा खराब हो रहा है. Almost like that. That's maybe conditioned, I guess. But I want to say now, regarding a question you had asked earlier, I think we have glorified difficult things. So, agar, for example, if I ask anyone, if someone comes and tells you, your life is so easy, how would you feel? You will almost take it as an insult. अगर कोई तो बोले अरे आपका लाइफ इतना आसान है, करेक्ट, आपको लगेगा कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है. बिल्कुल. क्योंकि हम इजी को बेकार समझते हैं और डिफिकल्ट को अच्छा. Correct. But actually, if your life is easy, it's a compliment. Yeah. And I think that is one thing that we keep trying to do difficult things, and not just because something is difficult doesn't mean it's useful. And we want to try to put ourselves in artificially difficult scenarios. There are some controversial opinions, even running a full marathon. Now, there's a controversial thing that is it actually very good for your body or not? Potentially, from a purely health standpoint, a half marathon or a 10K could potentially be better. I mean, unless you're training very, very well, maybe full marathon is better. But like most people may not be training in that scientific manner because it could even long-term damage you more running,
putting yourself in a very, very, very difficult scenario. So my point is just that we are so obsessed with doing difficult things that a lot of people, when they are young, their dream is Mount Everest climb करना है या मुझे सातों कॉन्टिनेंट में जाके माउंटेन क्लाइंब करना है. मतलब it is just coming off. And we encourage those dreams, which is not a bad thing. I'm just saying that. When you're saying this ना, I keep thinking that ये आदमी बोलते हैं सारी चीजें. आदमियों को जबरदस्ती बनानी है मुश्किल. ढूंढना है कुछ. I'm not saying it, doing that is wrong No, per se. fair, yeah. But is it something which we should glorify as much? I'm not sure. And I think that is what sometimes you asking, your original question was around how do you find time to take it easy? Yeah. I struggle with that because when things are going easy, I am finding ways to make my life difficult. कि यार अब तो कुछ खे नहीं करने को यार, थोड़ा और चीज ऐड करते तो एक और ब्रांड को एक्सपोज कर देता हूँ. So that is the challenge. Like अभी for example, दूसरों की लाइफ डिफिकल्ट बनाते हो. और नहीं, और in your own way. For example, अभी I'm very conflicted. Should I start a separate channel called Skin Farmer for the skin industry? Like, you know, there's a lot of jhol in the skin industry. But a lot of people have told me you're just making your own life difficult. So I'm confused now, but I also have that thing ना कि keep challenging yourself. मतलब मजा आता है. Keep pushing yourself. वही है की पुशिंग. नो बट ये सो राइट यार. मैं संडे को रेस्ट क्यों नहीं कर पाता. संडे को मैंने ना प्रोडक्टिव ही बनाया. और प्रोडक्टिव क्या होता है कि प्रोडक्टिव नॉट की मीनिंग होना चाहिए कि अगर आपने वेस्ट भी किया ना संडे को तो अच्छे तरीके से वेस्ट करना है. खराब तरीके से वेस्ट नहीं करना है. ये नहीं कि आपका संडे को कोई प्लान नहीं था, आप बस बैठे हुए थे और वो निकल गया दिन. वो खराब तरीका है वेस्ट करने का. संडे करेक्ट तरीका है कि आपने प्लान किया मैं 2 घंटे वेस्ट करूंगा. वो प्लान अगर नहीं किया तो आपकी मीनिंग नहीं है जिंदगी के अंदर. बट आपका एंजॉयमेंट किसमें है? वही तो बात. If you enjoy being busy, my point is very simple, right? But what is the umbrella of this discussion? Yeah. It is mental health. Yeah. Of every kind, right? Yeah. My point is, what makes you happy? Working makes you happy. Then that is your parameter of comparison, not of the fact that I am not working and I am enjoying my life. Because it's the same thing, no? It's the chicken and egg. Which one are you following? My point is, a comparison needs to come from your end, na yaar. मतलब I love working out on a Sunday. Yeah. Everyone questions me यार कि Sunday को कौन जिम जाता है? Yeah. But I will wake up in the morning on a Sunday. I'll be in the gym. I'll spend some time with my family. I'll drive all the way to Colaba. I'll sail for 4 hours, and I'll meet my friends in the evening. Have a few drinks with them. Monday morning 8 o'clock I'm again up. You know, so I feel like ये है वो टोक्यो वाली लाइफस्टाइल जो मैं बता रहा था. बिल्कुल नहीं actually. But my point is, I feel like you have to construct a life in a way whatever makes you happy, यार. I feel like that is so important to add to. Because बड़ा अच्छा आपने point पूछा था उससे पहले कि you know एक आदमी नर्चरर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, right? तो बहुत बड़ा हैंड होल्डिंग आपके पार्टनर का जरूरी है, जिसमें आपकी फीमेल काउंटर पार्ट है वो आपको कंफर्टेबल एंड मैन इनफ फील कराएं कि यार if you want to, let's say, cry about something in life right now. Absolutely. Right? You are going through a point in your life, and at this moment, I will still respect you for being a man, being alpha, and being a provider, even if you share your emotions with me as vividly, as vulnerably as you would want to. So जिस तरीके से एक बच्चा अपनी माँ के पास जाके रोएगा, without the understanding कि मैं एक लड़का हूँ, मेरी माँ औरत है, या मैं लड़की हूँ, मेरी माँ औरत है. अगर उस तरीके से एक पार्टनर आपको मिले लाइफ में जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, तो आप नर्चरर भी बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके लिए आप हमेशा अल्फा भी बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, और आप हमेशा उसको कॉम्प्रीहेंड करके उसकी भी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे लाइफ में. बिल्कुल. बट आई फील ये बड़ा एक पैडेड सिचुएशन होता है और ये बहुत सिम्बायोटिक होना चाहिए. No, बिल्कुल. एक जिंदगी ऐसी आनी चाहिए, वक्त ऐसा आना चाहिए कि हमको हमेशा हर बात के लिए ना डिस्क्लेमर देने की जरूरत नहीं है. यार किसी को ऑफेंड करने के लिए कर रहे हैं यार. आई हैव अ वेरी सिंपल फंडा. इफ today, let's say we are all friends. If we are not adding value to each other in terms of maybe something intellectual or something emotional, then I don't think we're friends. We are acquaintances or we're social friends. So I'm never going to be sharing my true in-depth life with any of you. जितने आप बड़े होते हैं उतना आप रियलाइज करते हैं कि आपको 10 दोस्तों की जरूरत नहीं है, आपको एक दोस्त की जरूरत है. अगर आपका वो एक जो लड़का दोस्त है वो आपको कॉन्स्टेंटली एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल दे रहा है, उतना काफी है. अगर आपकी एक कोई फीमेल काउंटर पार्ट या पार्टनर है जो आपको उतना कंफर्ट दे रहा है, आपको वही एक गर्लफ्रेंड, वही एक वाइफ चाहिए. सो मेरा एक हमेशा प्रिंसिपल रहा है लाइफ में. सॉरी आई एम टेकिंग टू मच टाइम, बट this is what I hope like comes out of tables like this. Yeah, you have this honest conversation. So I feel like अगर आपको जिंदगी में बढ़ना है, if you want to feel empowered and you really want the wind beneath your wings,
you have to very carefully choose who are the closest people in your circle. So And if you don't have those people, you rather fly solo. Because instead of weighing yourself down from constant judgment from the 5 people you assume to be the closest, you rather be alone, yeah? But I feel like today, as a man, do you encourage another man to talk about his emotions? Absolutely. Till the time we don't allow conversations like today to happen, I don't think more men are going to be comfortable to reach out to each other saying, hey, you know what? There's something I want to talk to you about, man. I'm going through a breakup. I'm not being able to handle it. Yeah. But I feel like ये सारी बातें आप तब करना शुरू करोगे जब आप पहले खुद वो step लोगे. So if what you're expecting, you have to first be an example yourself. Yeah. So are you being vulnerable with your guy friends? If you are, then that guy friend will feel vulnerable enough with you, and that's the cycle that is going to pick on. Yeah. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.